Hello dear students, good afternoon to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Principles of Agronomy and course number is EAS 5111. Okay, so our today's topic is cropping system and cropping pattern. So in our previous lecture we had already seen some basic principles of crop rotations and some advantages and disadvantages also. Okay, so in this lecture we have discussed the major cropping system. Okay, so from major cropping system we have three category, which is lowland and irrigated uplands, then irrigated lowland areas also. Okay, irrigated upland areas and rain-fed upland areas. Okay, so these three major categories are from cropping system. Okay, so we will discuss all three types of cropping system, we can say that. So let us see the first one, which is lowland and irrigated upland system. So cropping system vary widely from the simplest system of two crops an year in sequence of crop complex intercropping with many crops. So multiple cropped land can be broadly grouped into lowland, irrigated uplands and rain-fed uplands. Okay, so we have first category, which name is lowland and irrigated upland. Okay, so what is lowland? As name suggests, the crop sown in lowland area, that is called the lowland cropping system. As simple as that. Okay, so rice based cropping system predominant in lowlands. Number of crops per year and the crop that follow or precede rice depends on the period of water availability and the degree of control of water. Okay, so basically we can say that the rice based cropping system is predominant in lowland areas. Okay, so highlight that particular term, which is predominant lowland areas. Okay, so every time question has been asked that the rice is grown in which place, so you can write that answer like rice comes under the category of lowland and irrigated upland. Okay, so let us move where irrigation or rainfall is more than 200 mm per month, extend over 9 to 10 months. The system could be rice and rice and rice upland crop or upland crop rice and rice. Okay, so basically हम कैसे उगाते हैं rice. It means कि हमने us season में लिया. We have three categories for growing rice crop. Okay, so first is us, and the second one is a aman and the third one is a boro. ओके, सो तीन सीज़न है जैसे हम अस अमन बोरो कहते हैं. ठीक है, तो इस जो क्रॉपिंग सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं कि राइस एंड राइस क्रॉपिंग सिस्टम और एज वेल एज क्रॉपिंग पैटर्न. ओके, देन व्हेन दिस पीरियड इज लिमिटेड टू 6 to 8 months, upland crop rice, upland crop or upland crop may be appropriated. Early maturing rice cultivars are ideal for such sequences. If water is available for 4 to 5 months, only one rice crop is grown. Okay, so basically जो irrigated lowland rice होता है, ठीक है, lowland में ही हम राइस उगाते हैं. ठीक है, पैडी की क्रॉप उगाते हैं और जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी जो होती है, ठीक है, वो मोर देन 1500 मिलीमीटर होती है, वहाँ पे हम ये इरिगेटेड जो लोलैंड राइस इंटेंसिफिकेशन जो हम लेते हैं वो अगर हम इस क्राइटेरिया में हम लेते हैं कि जहाँ पे 1500 mm तक से ज़्यादा तक की बारिश हो, रेनफॉल हो. ठीक है, तो बेसिकली जहाँ इरिगेशन या रेनफॉल जो है मोर देन 2000 पर, मैंने आपको जो 1500 बताया वो पूरे सीज़न के लिए. ठीक है, बट अगर हम देखें पर मंथ के अकॉर्डिंगली तो मोर देन 200 mm जो रेनफॉल है वो क्या है एक्सपेक्टेड होता है फॉर द lowland irrigated राइस के लिए. ओके, so let us move. The second one is irrigated uplands. Okay, so as the name suggests, irrigated uplands मतलब upland area में where irrigation canals and irrigation resources are found, and that particular area we have grown that rice cultivation and another irrigated upland
crops. Okay, so as you can see, in irrigated upland where winter is mild, upland crop that can follow rice include legumes such as green gram. Green gram is what? We can also say that moong is also called the green gram, okay, and the black gram is also called urd, okay, and the soybean and groundnuts cereals such as maize, sorghum, pearl millet, finger millets, and other crops such as cotton, sunflower, and vegetables. Where the winter is cool, important crops which can follow rice, wheat, barley, mustard, chickpea, and potato. So these are the kind of irrigated upland crops we could say. Okay, so first one is one irrigation high rainfall upland sequential cropping with a wide range of crop is possible. Okay, so जहाँ रेनफॉल अपलैंड राइस में हम देखते हैं कि एक सिक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम हम ले सकते हैं. लाइकवाइज द ग्रीन ग्राम, देन आफ्टर वी हैव sown some sunflower or safflower, after that we could apply some vegetables crop also. Okay, so the system could be cereal and cereal, legume and oil seeds or other cash crop. Okay, so cash crop means जिनसे हमें बहुत ज़्यादा instant money provide हो जाता है. We can get the instant money for that particular crop, that is called the cash crop. Okay, and the second thing is in northern India, potatoes and mustard can be added to maize, wheat by relay planting either of these in the standing maize and delaying wheat by about 2 months. So short duration green gram or fodder crops can be grown after the harvest of wheat in summer. If we can grow समर वीट. ओके, मतलब जब हम समर सीजन में वीट उगाते हैं तो हमें शॉर्ट ड्यूरेशन ग्रीन ग्राम और फॉडर क्रॉप्स के लिए भी समय मिल जाता है. ओके, सो हम ये कब करते हैं ग्रीन ग्राम और जो फॉडर क्रॉप्स होता है, जब हम इरिगेटेड अपलैंड में हम क्रॉपिंग करते रहते हैं. ठीक है, मतलब इरिगेटेड अपलैंड एरिया में या रीजन में जब हम क्रॉपिंग सिस्टम या क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन ग्राम एंड फॉडर क्रॉप जो है हाईली वाटर रिक्वायरमेंट्स क्रॉप है. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट. ओके, एंड द थर्ड वन इज वी हैव रेनफेड अपलैंड. सो व्हाट इज रेनफेड अपलैंड? मीन्स जो वर्षा पे आधारित हो. ठीक है, इस तरीके के जो रीजन होते हैं या इस तरीके का जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड द रेनफेड एरिया. ओके, सो रेनफेड एरिया में हम कह सकते हैं वेयर द एरिया वेयर the 750 mm less than 750 mm rainfall is found, that particular area is called the rainfed upland areas or region. Okay, so cropping system in rainfed upland predominantly takes the form of intercropping in alfie shoals, incepti shoals and anti shoals during raining season. Okay, so this is some kind of types of, we can say, types of soil. What kind of types of soil? Which is alfie soil, incepti soil and anti soil. ठीक है, so cereal plus pigeon pea system or sorghum plus pigeon pea, then cereal plus cotton या setaria plus cotton are popular in India for which place? For rain-fed upland region. Okay, so in vertisol of high moisture retentivity, land is kept fallow during rainy season, followed by sorghum, chickpea, sunflower or coriander और stored soil moisture during post rainy season. ओके, सो हम जहाँ पे हमें वाटर मॉइस्चर को क्या करना रहता है, होल्ड करने के रखना होता है सॉइल पे. ठीक है, क्यों होल्ड करके रखना होता है? क्योंकि ये रेनफेड एरिया है. ठीक है, मतलब वर्षा पे आधारित एरिया है, जहाँ 750 से लेके 1500 तक के जो हमारा मिलीमीटर जो रेनफॉल रिक्वायरमेंट होता है जिस प्लेस में, वो जो एरिया है वो रेनफेड एरिया के कैटेगरी में आता है. ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि रेनफेड एरिया क्या होता है, जहाँ हम कह सकते हैं मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन अ रीजन वेयर annual rainfall is more than 115 mm is called rainfed farming or rainfed area, and the dryland area is the cultivation crop in area where annual rainfall is more than 750 millimeter but less than 115
0 mm इज कॉल्ड ड्राई लैंड, मतलब जहाँ 750 से 1150 तक के जो रेनफॉल होता है, मिलीमीटर रेनफॉल होता है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम ड्राई लैंड फार्मिंग की कैटेगरी में रखते हैं। और जहाँ मोर देन 1150, ठीक है, मतलब हम एक रेंज डिवाइड कर सकते हैं कि मोर देन 750 to 1500, ओके, इजंट इट। तो 750 to 1500 जहाँ पे रेनफॉल रिक्वायर होता है या हमें दिखाई होता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द रेन फेड एरियाज, ओके। So anyways, let us move. However, double cropping can be practiced if the monsoon is relatively early. Under such conditions, sorghum, pearl millet or a pulse crop can be taken during rainy season, followed by sunflower, safflower, chickpea or coriander in post rainy season. Okay, so these are the cropping system, we can say that. We have three category, which is lowland irrigated upland rice, and the second is irrigated upland rice, and the third and last one is rain fed upland rice. Okay, so आज के लिए बस इतना ही हम देखते हैं। हमने 3 कैटेगरी देखा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अलग अलग क्रॉपिंग सिस्टम को हमने कैसे पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। So thank you very much, and till then be safe, take care, thank you.